अच्छा, इस क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा मूव करते हैं, मुझे याद आ गया। Why turns purple and it yellow? क्या कह सकती हैं आप इसमें, किस वजह से ये पर्पल और येलो हो गए दोनों सोल्यूशन? दिस इज पर्पल एंड दिस इज येलो। क्या रीजन क्या हो सकती है, कोई आपके जहन में आ रही हो कोई भी चीज? चलिए मैं बताती हूँ। ड्यू टू, ये जो पर्पल होगा ना, इसका कलर हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर का, इसका होगा ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें, उसको एस्केप करने के लिए कोई वो नहीं मिल रही है प्लेस, तो इट इज पर्पल। ठीक है, अब ये सोल्यूशन येलो हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस हुई नहीं है, और जो है वो इसी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो इसी में जो है वो इस वजह से इसका कलर जो है वो येलो सोल्यूशन। ठीक है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स हो गया और इसका कलर जो हो जाएगा वो पर्पल हो जाएगा। ठीक है, और इसका सोल्यूशन का क्यों होगा कलर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो एस्केप नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें लेवल है वो लो हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाएगा। गॉट इट? यस। नेक्स्ट आ जाते हैं 20. Which graph shows how the pressure inside the lungs changes when taking one breath in? ठीक है, इनहेलेशन आ रही है बस। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए में इंक्रीज होगा, तो जब आप ब्रेथ इन करते हैं तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जिस ए डिक्रीज की तरफ इस साइड पे होगा। ठीक है, सो इट इज ये दोनों तो वैसे ही। Some features that help defend the body against pathogens are listed. Mucus, skin, stomach acid, phagocytosis, which feature can prevent pathogen entering body tissue. तो बॉडी टिश्यू में आप आते हैं बताना। नहीं, देखो इसमें some feature help to defend the body against pathogen listed: mucus, skin, stomach acid, phagocytosis. Which features can prevent pathogen entering body tissue? Phagocytosis जो होता है ना, उसमें तो वो उसको इनगल्फ कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जब ठीक है, तो अब इसमें क्या है, बॉडी टिश्यू में एंटर होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करते हैं।
ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो तो आपको पता है कि वो ब्लड के पार्ट होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा म्यूकस। नंबर 2 स्किन, उसको सबसे पहले डिफेंड करेगी, ठीक है, म्यूकस एंड देन स्टमक एसिड, सो दैट के उधर ही डिसॉल्व हो जाए विद HCl, ठीक है, और वो बॉडी का पार्ट ना ही बने, एब्जॉर्प्शन की तरफ वो नहीं जाए, ठीक है। सो इट इज बी। The diagram shows the apparatus used to measure the rate of respiration in germinating seeds. At the seed aspire, the bubble of colored water moves along the glass tube. जैसे जैसे seed aspire करेंगे ये bubble जो है ये move करेगा, ठीक है। Soda lime to absorb carbon dioxide. The temperature is increased from 20 to 40 degrees centigrade. What happened to the movement of bubble as the temperature increases? The bubble moves more quickly towards the seed at 40 degrees centigrade than at 20 degrees centigrade. Okay. So, which statement about lactic acid is correct? Lactic acid is product of anaerobic respiration in yeast. Lactic acid buildup in tissues can lead to an oxygen debt. Yes. ये आपके मसल्स में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड जब आप ऑक्सीजन डेप्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से। The diagram shows a mammalian kidney, renal artery, renal vein और बाकी उन्होंने आपको जो है वो एक्स वाई एंड सी बताया हुआ, ये आपने बताना है कितनी चीज़ें क्या है, ठीक है। What are areas X, Y and C? X तो आपको पता है it is cortex, ठीक है, X is cortex, Y is ureter and Z is medulla. It is option. The structures listed are part of the nervous system: brain, effector, receptor, relay neuron. In a reflex arc, which structure are connected to a motor neuron by synapses? Effector and relay neuron. देखो ये होती है ना, ये आपके पास synapse में आपको दिखा रही हूँ। पता है इसमें केमिकल होता है जिसमें फिर वो डिफ्यूज होता है, फिर नेक्स्ट आपके फिर ये ट्रांसफर होता है from effector to relay neuron. So it is 2 and 4. Which process is the response of the body that is part of a negative feedback process? Release of insulin in response to low blood glucose concentration. No. Vasoconstriction in response to an increase in blood temperature. No. Synthesis of glycogen in response to increase in blood glucose concentration. Yes. Yes. Sweating in response to decrease in blood temperature. ठीक है, तो फीडबैक
फीडबैक जो आपके पास नेगेटिव फीडबैक होगी वो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। 27. Which show shows the pupil reflects in bright light? Muscles in iris, size of pupil. तो मसल्स जो आयरस के होंगे वो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेडियल मसल्स रिलैक्स करेंगे, ठीक है। और प्यूपल साइज आपका क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा, ब्राइट लाइट है ना, that is option B. A seed is placed and drawn on a rotating disc as shown. Seed pinned to be constantly rotating disc. तो सब हमने पिन कर दिया। Which diagram shows the appearance of the seedling shoot after 7 days? ये आपके पास सीडलिंग है, ठीक है, यहाँ हमने इसे पिन अप कर दिया, ठीक है। सीडलिंग शूट आपने बतानी है, ठीक है। तो ये आपके पास इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ये स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंटेड नहीं होगी किसी भी साइड, स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर commercial plant growers use asexual reproduction to grow plants which produce crops of coffee beans. What is a disadvantage of asexual reproduction? The coffee beans produced by all of the plants are identical. Two parent plants are needed. One plant is needed. अब आपने disadvantage बताना है, ये तीनों disadvantage नहीं है। Plants are equally susceptible to the same disease. All plants are equal to the same disease. 30. Which statement about the human immunodeficiency virus is HIV is correct? Antibodies cannot be made. HIV infection can be treated with antibiotics. HIV destroys lymphocytes. Yes, HIV is spread by coughing business. Which statement about a diploid human cell is correct? There are 22 chromosomes and an X or a Y chromosome. There are 22 pairs of chromosomes and 2 X chromosomes. Yes, this one. All these are wrong. The allele for hemophilia is found on the X chromosome and the allele for hemophilia is recessive. The allele जो है वो recessive and gene is found on the X chromosome. In the pedigree diagram, the dominant allele is shown as X8 and the recessive allele is shown as X small a. ये आप दोनों ने pedigree diagram देखा। What is the probability of child having hemophilia? So recessive allele X8 यानी X small a doesn't show hemophilia, ठीक है, and dominant allele is X capital H, जिसमें X capital H होगा, it shows disease, ठीक है। तो कितने परसेंट चांसेस होंगे? 50%, क्योंकि ये आप देखें ना, डोमिनेंट रिसेसिव allele जो है वो सिर्फ इसमें शो हो रहा है, ठीक है। बाकी जो है इट मेल ऑल्सो है डोमिनेंट, तो जब ये डिजीज ट्रांसफर होगी तो 50% जो वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो इस तरह से इसके बन जाएंगे।
So it is 0.50%. What is an adaptive feature of xerophytes? They don't have hair cells. Their leaves have a large surface area. They have many stomata, and their leaves have thick cuticles. So it is 34. The graph shows the growth of a bacterial population, which section represents the exponential phase. आपने exponential phase इसमें बतानी है. Number of bacteria and time. ये आपकी आ जाती है exponential growth. जिसमें कि वो इंक्रीज की तरफ जा रही है. ठीक है. A species of insect usually has pale colored wings. This helps to camouflage them on pale colored tree trunks. A few of the insects in this species have darker colored wings. After a number of years, the tree trunk becomes darker in color due to environmental changes. The insects with dark colored wings become more common than insects with pale colored wings in this species. Which process causes the change in the proportion of insects with dark colored wings? ये हमने उसमें देखा था पेपर मोड में, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है. So it is natural selection क्योंकि environmental changes हैं. So it is a natural selection. 36. The diagram shows part of the nitrogen cycle. ठीक है. Ammonium, atmospheric nitrogen, ammonium nitrates, protein and amino acids, then proteins and amino acids, animal urea, death and decomposition, and then ammonium again, and then it is goes to the atmosphere. Okay. Which processes are carried out by बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया से आपको पता है कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिकम्पोजिशन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं. तो आपके पास ये आ जाता है 1, 2, 6, 1, 2, 6 and 7. ठीक है. ये तो आपको पता ही लग रहा है 6 ये तो ये तो बैक्टीरिया से 1 भी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होगी, एटमॉस्फेयर में जा रही है. अब 1 और 2 क्यों आए हैं? These are the nitrifying bacteria. ठीक है. Atmospheric nitrogen change into ammonia and then these are changed into nitrates in the soil. Okay, तो आपके पास यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी. What is the characteristics of bacteria that make them useful in genetic engineering? Plasmid can be transferred between cells. सिंपल देख लेते हैं इसको. Plasmid can be transferred between cells. What is the useful product of anaerobic respiration in the manufacture of bread? Carbon dioxide. 39. What are reasons why species become endangered? Habitat destruction, hunting and introduce species. More species आप introduce कर देते हैं अगर उस एरिया में, तो वो जो है उसके habitat destruction की तरफ endangered की तरफ चला जाता है.
If the nitrate concentration in a lake increases, fish may die due to events listed. Increased aerobic respiration decomposes, increased decomposition of dead producers, increased growth of producers, reduction in dissolvents. Which sequence of event would lead to the death of the fish? तो सबसे पहले आ जाएगा इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आपको पता है प्लांट्स होते चाहे किसी भी टाइप्स के आ जाए, ये आपके पास आ जाएगा 3। देन आपके पास आएगा इंक्रीज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। देन इंक्रीज एरोबिक रेस्पिरेशन बाय डिकम्पोजर्स, ओके। जब वो डिकम्पोजिशन होगी डेड प्रोडक्ट्स की तो अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स का रोल स्टार्ट हो जाएगा एंड दे रेस्पायर and reduction in dissolved oxygen, and when they respire there is a reduction in dissolved oxygen, so it is ग्रोथ कैसे ज्यादा होगी प्रोड्यूसर्स। वैसे मैं आपसे क्वेश्चन करेंगे कि लेक इकोसिस्टम हमने काफी डिफाइन किया हुआ है। ये आपके पास लेक है ना, तो इसमें आपके पास फिश है, प्लांट्स हैं, अदर इक्वेटिव एनिमल्स। ये होगा कि फर्टिलाइजर ज्यादा हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ हो जाती है ज्यादा, एल्गी की या प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर एंड देन जो डेथ होगी प्रोड्यूसर की उसमें फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। बस वो एक ये कवर कर लेंगे, पार्ट्स ऑफ एल्गी जो होते हैं दे कवर ऑल एरिया, उसकी वजह से भी फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है और जो है फोटोसिंथेसिस अपर एरिया पे जो जो के लिए सफोकेशन हो जाएगी। So its option is C. Got it?